अब से कुछ ही देर में बिहार के चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अब से कुछ ही देर में बिहार के चुनाव की घोषणा होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार के चुनाव की सरगर्मी तेज होती दिखेगी और इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू से, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार और आनंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, बिहार के चुनाव में इस बार किरदार हैं कई सारे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन की राजनीति को एक नया आयाम बिहार के चुनाव ने हमेशा दिया। इस बार गठबंधन जिस तरह से एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा होता दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी खड़े हो पाएंगे? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो ये कि आपने कहा कि गठबंधन की राजनीति को नया आयाम दिया है। मैं इसको थोड़ा सा अलग देखता हूं कि इतना मजबूर कर देगी गठबंधन की राजनीति सभी राजनीतिक दलों को, ये बिहार ने दिखाया है। और चूंकि जब 2015 के हम चुनावों की बात करते हैं तो 2015 के चुनावों में निश्चित तौर पर कई लोगों को लगा और वहां जो जमीन पर जो खबर थी वो निश्चित तौर पर यही थी कि लालू जी और नीतीश जी मिलकर चुनाव जीत रहे हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक बड़ा वर्ग था जिसको बदलाव की उम्मीद थी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो साहस छोड़ दिया, जिसको मैं कहूंगा कि गठबंधन की मजबूरी की राजनीति को स्वीकार किया, इसका नतीजा देखिए कि भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों के वहां मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी ही नहीं है, मतलब दावेदार ही नहीं है, जिसको कहते हैं कोई दावा ही उन्होंने छोड़ दिया है। सुशील मोदी जी सहायक है नीतीश जी के और कांग्रेस का तो अता पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम गठबंधन की राजनीति के तौर पर देखेंगे तो नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री आसानी से बनते हुए दिख रहे हैं। और तेजस्वी यादव को लेकर भले बहुत मतलब तंबू का नाद बहुत गाड़ा गया, बहुत कुछ कहा गया कि वैकल्पिक राजनीति को ये लेकर आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो ताकत राष्ट्रीय जनता दल नहीं दिखा पाया जो 17-18% वोट वाली पार्टी को दिखाना चाहिए था। और खास करके तब जब 2017 में नीतीश ने उनको डंप कर दिया और नीतीश जी ने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री भाजपा के साथ। बिल्कुल आनंद, हम बिहार को देखते हैं तो वहां पर एक नौजवान पीढ़ी बड़े पैमाने पर दिखती है। एक तरफ चिराग पासवान दिखाई देते हैं, तेजस्वी हैं, और उसके साथ साथ कुछ और ऐसे लोग हैं जो सीपीआई से जुड़े हैं, जो अपने आप को वहां पर एक नई राजनीति की खेप के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। इसके बावजूद नई पीढ़ी की राजनीति शायद कहीं आगे बढ़ती दिख नहीं रही। देखिए अजय, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर बिहार इलेक्शन को आज की तारीख में अगर हम एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि 3 बिंदु इसके खास तौर से हमको देखना चाहिए। पहला मुद्दे, दूसरा चेहरा और तीसरा गठबंधन। तो जैसा गठबंधन पे आप खुद बोल रहे हैं, हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, रामकृपाल जी बोल रहे हैं, सभी का मानना है कि गठबंधन आज की तारीख में इंटैक्ट है। अब अगर पासवान कहीं इधर उधर जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं तो बात दूसरी है, तो उनकी पूर्ति करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब हम आज बात कर रहे हैं, आज एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि एनडीए जो है वो इंटैक्ट है। तो गठबंधन के तौर पर अगर देखें तो बहुत आगे है महागठबंधन से ये वाला जो एनडीए का पूरा मामला है। अगर हम चेहरे की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी को बतौर सीएम पेश किया जाए अगर, तो उसको जनता वहां पे मानेगी। कम से कम मुझे जाति तौर पर ऐसा नहीं लगता है। तो अगर हम चेहरा देखें तो नो डाउट, और बीजेपी बोल चुकी है कि वहां पे मुख्यमंत्री जो रहेंगे वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो इसमें कोई दौराय नहीं है। और तीसरे रही मुद्दे की बात, तो देखिए मुद्दे में पर्सपेक्टिव हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता का, वो कह सकता है कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, ये बहुत बहस का मुद्दा होता है। लेकिन क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो चुनावी मुद्दे बन पा रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कम से कम जो बीजेपी की रणनीति है या उनके जो कार्यकर्ता जितने सक्रिय रहते हैं, जो उनका पूरा मोबिलाइजेशन रहता है, तो उससे कम से कम ऐसा लगता है कि वो मुद्दे नहीं बन पाएंगे। जहां तक आपने बोला, देखिए चिराग पासवान, आनंद जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। आपने कहा कि क्या जो मुद्दे आम जनता के हैं वो मुद्दे ही चुनाव में हावी रहेंगे? ऐसा लगता नहीं है आपको कि इस बार सुशांत सिंह राजपूत सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव में? सब कुछ तो उसी के आसपास हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी भी बिल्कुल तैयार है बिल्कुल चुनाव में मैदान में उतरने के लिए, तो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और बीजेपी ने जिस हिसाब से उस पर स्टैंड लिया है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इशू रहेगा वहाँ पर। यूथ के बीच में एक चर्चा का विषय भी है निश्चित तौर से। लेकिन जो सवाल आपका था अजय, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे चिराग पासवान हो या तेजस्वी हो, ये वहाँ पे किसी भी तरह से अगर हम मेरिट की बात करें तो वो नीतीश के बराबर जाके खड़े हो पाते हैं। चुग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चुग साहब, सुशांत सिंह राजपूत हत्या या आत्महत्या, इसकी गुत्थी तो अभी तक सुलझी नहीं है। करीबन 100 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं।
लेकिन बीजेपी ने पोस्टर्स बनवा लिए इसके। बिहार के चुनाव के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्या? ऐसा है कि जो पिछले 30-40 साल में एक पूरे देश के अंदर एक नया कल्चर पैदा हुआ है, मेट्रो कल्चर, जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के बच्चे दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए, काम करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। और बिहार एक ऐसा फर्टाइल क्षेत्र है जिसने पूरे देश के अंदर प्रतिभा को फैलाया है। वहाँ के बच्चों ने जाकर, चाहे वो फिल्म फील्ड हो, चाहे IAS IPS हो, चाहे इंजीनियर्स हो, वो बच्चे जो हैं पूरे देश के अंदर फैले हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केवल एक ऐसा कि वो फिल्म एक्टर है इसलिए नहीं, एक वो उन सब माँ बाप के लिए एक वही चिंता बनती है जैसे मेरा बच्चा वहाँ बाहर पढ़ने के लिए गया है या मेरा बच्चा वहाँ कोई काम कर रहा है। और उसके साथ This press conference is being telecast live and also the live streaming link has been shared with all of you for the benefit of those who are not available in this hall. I would request Honorable Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora to kindly make his opening statement, after which the floor would be open to questions. Over to you, sir. One of the most valuable stakeholders for ECI, friends from media. I was getting messages after messages, so were my colleagues, especially yesterday, day before. I only wrote one sentence, that please enjoy your weekend. Nothing else. I would like to start the press conference, our interaction rather, and I would like to make it very clear at the very outset that as always, you can ask as many questions as you like. Of course, Shefali would kind of moderate and regulate that part. I would like to start this interaction by formally introducing our colleague who has taken over very recently, Rajiv Kumar ji, in the Election Commission. Just as the gain of ADB is a loss of ECI in respect of Mr. Lavasa, Rajiv Kumar ji is not a stranger to any of you. In fact, he is not a stranger to the country as such, having been banking secretary in the most turbulent and difficult times, finance secretary of the country, and earlier establishment officer in the Department of Personnel, besides his many other distinguished his other assignments. And he is also, from the very limited interaction in the last couple of days, one can know that he is also like both of us, me and Sushil ji. He plays under the radar, but plays very effectively. We last met at the time of announcement of elections to the Assembly of NCT of Delhi on January 6, 2020. The world has changed significantly since then, and certainly not for the better. The uncertainty and devastation caused by COVID-19 in the world has changed the way we live and work. It has forced a so-called new normal, which is not normal, but it's a new normal in every aspect of our lives, social, economic, and cultural. As the pandemic spread across the world, the first reaction of the election management bodies of many countries where elections were due was to postpone the elections, hoping that the pandemic would soon loosen its grip and they will be able to conduct their elections in a more conducive environment.
more than 70 countries postponed their elections. However, as the days and months passed and the COVID does not really show any sign of abating and went on unpredictable curves and trajectories, going up one day, going down, slightly down, and then very up another day, it was realized that some way would have to be found to balance the democratic rights of the citizen, of the electorate, to choose their representatives, while also making a very sincere effort and systematic effort to protect the health and safety of the people. Consequently, many countries hazarded to venture and took the courageous decision to go ahead with the elections in their election schedules, making adjustments and adherence to the new safety norms. ECI treaded safely but firmly and started by conducting elections to 18 seats of Rajya Sabha as well as some MLC elections. As you are aware, elections of Rajya Sabha are indirect, but they involve around 984 eligible electors across 8 states of the country. Stringent health and safety protocols were enforced during this election. After the successful conduct of these elections amid COVID crisis, ECI had all along been doing kind of parallel exercise on what to do about Bihar and what to do about the by-elections in a couple of state assemblies. And these were quite meticulous preparations, to which I'll allude to in a while. So today, friends, we are here. The Commission is here before you to announce the elections to the largest assembly of one of the largest states of India, which is Bihar. I think if you see the relative statistics, it would probably be, as a very senior friend from media said in the morning, the biggest election in the world in the COVID times, in the immediate future. You're all aware that the term of assembly in Bihar is due to expire on 29th November. Bihar Assembly has a strength of 243 members, of whom 38 seats are reserved for SCs and 2 for STs. COVID-19 exigencies and social distancing measures made the Commission revisit the extant instructions. One of the first major steps which was taken was to reduce the maximum number of electors at a polling station from 1,500 to 1,000. I am sure you will kindly appreciate the magnitude of this revision, because the number of polling stations as a result of this decision went up from 65,337 in the year 2015, the year of last, and to more than 1 lakh in 2020. This massive increase in the number of polling stations entails huge logistic and manpower implications. The special summary revision of the electoral rolls of Bihar was held with reference to 1-1-2020 as the qualifying date, and the final roll was published on February 7, 2020. The total electors in Bihar during 2015, when the last assembly elections were conducted, was 67 million. In 2022, now as we are sitting to brace for the polls,
the number is about 7.29 crore. That is 72 million. Male electors in 2015 were 3.57 crore, which has now risen to 3.85 crore. Number of female electors was 3.12 crore in 2015, and now it is 3.4 crore. The number of service electors rose from 92,144 to 1.6 lakhs. As far as deployment of EVMs, etc. is concerned, the main tool of elections, 1.89 lakh BUs, 1.41 lakh CUs, and 1.73 lakh VVPATs are being deployed in Bihar. To give you further glimpse of the magnitude of logistics to conduct elections during COVID, as per reports received from CEO Bihar, incidentally, we all have had series of interactions with the CEO and other officials of Bihar on a virtual basis, on which I'll come to in some more detail later. More than 7 lakh units of hand sanitizers, about 46 lakh masks, about 6 lakh PPE kits, 7.6 lakh units of face shields, and about 23 lakh hand gloves have been arranged. For the voters, there is 77.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged when they press the EVM, etc. As per reports received from the field units and collated by CEO Bihar, there were about 18.87 lakh migrants across 38 districts of Bihar. Out of these, 16.6 lakh were eligible to vote, being more than 18 years. 13.93 lakh had their names already on the rolls. During the process of continuous updation, 2.3 lakh voters were registered, and the process of updation is still on. I would take this opportunity to compliment CEO Bihar, the district election officers there, and the election machinery at the district and sub-district level, that they made assiduous efforts to connect with so many migrant workers in the process of registration. Now I come to some more special measures for COVID-19 safe elections. Elections usually involve large gatherings, not only on election day itself, but during campaigns, nominations, and other practices. These events increase human-to-human contact and the risk of direct and indirect disease transmission. The Commission has therefore taken the following steps to mitigate the risk and ensure safe elections. One of the significant ways in which the health impact of COVID-19 can be mitigated is by exploring options to in-person voting for certain vulnerable categories of people. You would recall that way back in October 2019, that is pre-COVID times, on the recommendations of the Commission, the concept of absentee voters was introduced, and it was used very effectively in Delhi at that time. After that, in the elections in Bihar, postal ballot facility has been extended as an option to senior citizens aged 80 and above. We were wanting to extend it to people from 65 and above. Political parties had their own views, but ultimately what clinched the argument of not going for that this time is that because of the increase in the number of polling stations, already our manpower requirements had increased so significantly that we realized we may not be able to manage the 65 part. So it remains 80 years. Persons with disability flagged in the electoral roll and COVID-19 suspect or affected persons all shall be taken care of, and in that we are following regarding the COVID-19. Even in Rajya Sabha, 1 or 2 MLAs
who were suspected, they had to cast their votes at the very end, after everybody else had gone through the voting process. Special protocol has been, there is also a facility of postal ballots wherever required or wherever asked for. We will also be deploying a lot of teams to ensure this process, as have been employed, and that we get a lot of cooperation. I am wanting to tell you that we get a lot of cooperation from civil society. We have been getting in the past, and I am sure we will get now also. Special protocol has been devised for electors who are COVID positive, suspect, quarantined, so that such citizens are able to exercise their franchise without in any way jeopardizing the health of other voters. COVID-19 patients who are quarantined will be able to cast their vote at the last day of the hour, poll day, at their respective polling stations, as I said earlier, under the supervision of health authorities, strictly following the laid down measures. This is besides the option of postal facility already extended to them. Nodal health officers will also be appointed at the state district level to oversee COVID-19 related arrangements and preventive measures during the entire electoral process. In order to further decongest polling spaces and allow more free movement of the voters, polling time has been increased. Polling time has been increased by 1 hour. Polling will now be held from 7 a.m. to 6 p.m. instead of 7 a.m. to 5 p.m. earlier. However, this will not be applicable to the left-wing affected areas. Nomination form and affidavit can now be filled up online and printout submitted to RO. Offline is also allowed, but online is also been introduced. Besides all this, security money can also be deposited through online mode. Candidates can also seek electoral certification digitally. The number of persons accompanying a candidate for submission of nomination has been restricted to 2. I repeat 2. And the number of vehicles shall be restricted to 2. I repeat 2. Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. Road shows are allowed, subject to the convoy being broken after every 5 vehicles. All election meetings and gatherings will have to adhere strictly to the health and safety protocols and shall be monitored at all levels by the election and health machinery in the field in the various districts of Bihar. I want to dispel doubts, friends, that all physical contact has been prohibited in election meetings and campaigning. In fact, the very fact that instead of talking to each other virtually today, we may not be accommodate all of you, but we still have made an effort to at least talk in person. Is an indication from the side of Election Commission that all this propaganda going on in certain sections, that only virtual campaigning will happen, etc., has been quite widely off the mark. Yes, we have stated that the number of people who can decongest who can congregate at a certain place has been limited. The DEOs shall identify dedicated grounds in advance where public gatherings can take place with social distancing norms clearly marked to ensure the safety of the attendants. I must report to you that already this exercise has been completed by DEOs. In fact, even within the commission now, we have a list of such grounds available district-wise, although this is not for commission to kind of take any kind of day-to-day call on this. It is for the CEO and the district magistrates. But we've got all the information. And the DEOs have been instructed to kind of already do the circling, etc., as per the COVID norms. That has been done by the CEO of Bihar.
A committee of officers was set up at the Commission to chalk out broad guidelines for conducting elections amid COVID. This committee was chaired by Shri Umesh Sinha, Secretary General, and it had various stakeholders, many of them contacted virtually. And they had detailed deliberations with the chief electoral officers of various states, UTs, just to have a feedback or various suggestions and inputs. The Commission also took inputs of political parties. They were initially given some time, they wanted some more time, which was extended as they desired. And the Commission had feedback from all the political parties with us, considering all the relevant factors and circumstances and keeping in view the safety norms specified by MHA. Broad and detailed guidelines were issued by the Commission for the conduct of elections and by-elections during sometime in August 2020. These guidelines have already been adopted to Government of Bihar, and these guidelines are available on the ECI website, and I think made available to most of you by Ashifali ji. Based on these broad guidelines, CEO Bihar was asked to prepare comprehensive plans at the state, district, constituency and booth level, considering the local conditions and COVID conditions and COVID situation. And these guidelines establish standard protocols of sanitization, wearing of masks, use of gloves, thermal scanners, and social distancing throughout the gamut of election activities. As the gradual and phased unlock has been initiated in various parts of the country, several meetings were held, as I said earlier, at the level of Secretary General ECI Shri Umesh Sinha and all other colleagues from ECI and officers of Commission with officials from MHA, Railways, central agencies regarding security forces, strategic and communication measures to be put in place. I am happy to report to you that we are getting fullest cooperation from all these agencies, and I am sure, like they do it always, they'll give us their cooperation this time also, which they are already extending. The Commission has conducted several rounds of video conferences with the election machinery. A team of 2 officers, namely Shri Chandrabhushan, who is in charge of Bihar in the Election Commission, and Shri Sudeep Jain, who looks after the EVM. They were in Bihar on 14th and 15th September, and they have done extensive review of the situation on the ground by holding more than 1 meetings in Patna as well as in some selected divisional headquarters. They have reported that all necessary preparations have been made and the infrastructure of conduct of elections is well in place. Commission, as you are aware, has always been very sensitive to the persons with disability and senior citizens. We started this process way back in 17-18 by having a conference in Rajasthan, then a national level conference in Delhi, and after that we have been trying to kind of upgrade and try to do various things required for that. One of our leading consultants in this, based out of Bangalore, she herself is disabled, but at the same time she is so very meticulous in terms of making suggestions and kind of more scientific innovations which keeps Shri Umesh Sinha and his team busy. Persons with disability, the first thing Commission has been insisting is that all polling stations should be located on the ground floor. Persons with disability would also be tagged to their respective polling stations and necessary arrangement made for their comfortable and convenient experience on polling day. Assistance of volunteers, priority voting, wheelchair and proper transport facilities shall be made available. They will be provided with a free pass on public transport on the poll day.
The third meeting of the National Advisory Committee on Accessible Elections was organized recently through online mode in order to hone up and firm up our strategic action plans on accessible elections and to review preparations on accessibility front ahead of Bihar Assembly elections. The Commission guarantees assured minimum facilities, which you are all aware, at each polling station, including drinking water, toilets, waiting area, and ramps. Additionally, polling stations will now be infused with sanitizers, masks, soap, and water for rinsing and other necessary equipment to handle any health emergency. Volunteers will be deployed to assist PWD voters, senior citizens, and COVID-affected areas, as I already said. All necessary and administrative and security protocols have been put in place for EVMs and VVPATs, including randomization, FLC, movement and storage protocols, and a multi-layer security cover. The ETPBS facility will be offered to our service voters. As we talk, the MCC stands enforced with this announcement. The Commission has already made elaborate arrangements for ensuring the effective implementation of MCC guidelines. You are also aware that Honorable Supreme Court, a lot of very vigilant citizen groups and the Commission itself have been very particular about this issue of criminal antecedents. Criminal candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspapers and TV channels on 3 occasions during the campaign period. Now it's also mandatory for political parties to upload on their website detailed information regarding individuals with pending criminal cases selected as candidates, along with reasons for such selection, and also why other individuals without criminal antecedents could not be selected. The Commission had issued a circular, I'm sure you have all gone through it very thoroughly, on 11 September 2025, clarifying the earlier guidelines and updating them further. The Commission has a multi-pronged, multifaceted, comprehensive strategy for curbing the use of money power elections through an elaborate mechanism of SSTs, FSTs, and expenditure accounting. Our friends in media are also aware that we have been appointing in the last few elections, wherever required, only where required and need-based, special expenditure observers. Depending on the inputs on the field, which you already have in plenty, we shall be doing the same this time in Bihar elections, as well as, if required, in the by-elections to the states. Media has always been a very important ally for the Commission by virtue of its very proactive and positive engagement and with the electoral process and reaching out to the voter through the length and breadth of the country. Media personnel covering election activities would be requested to follow all the extant guidelines issued by the Commission and the various state governments, and the Bihar state government, in case of by-elections, various state governments. Adverse use of social media platforms has emerged as a new challenge in the recent times. As such, it is necessary that persons or organizations misusing social media or similar digital platforms are dealt with sternly and kept at bay. The Commission would like to make it emphatically clear that anyone who makes mischievous use of social media, for example, trying to foment communal tensions, etc., for electoral purpose, shall have to face the consequences under the
law of the land. You are also aware that in the run-up to the Lok Sabha elections, a group of our officers had engaged with the media platforms and their association, and they had submitted a voluntary code of ethics to the ECI by their platforms, which most of them observed quite scrupulously. The social media platforms are expected to make adequate arrangements to safeguard against misuse of their platforms and set up strict protocols to handle such issues as and when they arise. If such arrangements are not made by them and they would not be allowed to take the pretext of being only the providers of platform and shall be held responsible if necessary action is not taken by them promptly and adequately. So, besides, Commission has also entreating the political parties and candidates to sensitize their representatives not to indulge in malpractices, malicious propaganda, hate speech, or fake news, as such acts shall be dealt with sternly, harshly by the Commission. We will be closely monitoring such activities and such posts and shall take action appropriately. You know that Commission has a full-fledged sweep division, and this time the emphasis shall be on safe elections and COVID-19 safety awareness programs, beside increasing voter turnout and ethical as well as informed decision making of the voters. Comprehensive use of print media, electronic media, radio, digital media and traditional outreach methods of voter awareness are being taken up to inform, facilitate and motivate voters. With all comprehensive arrangements made at the polling station, we hope that people, the ultimate arbiters in the democracy, shall participate with full enthusiasm, and the voter turnout will be more than the previous elections. The Commission, as always, will deploy sufficient number of general, police and expenditure observers in order to keep a close watch at every stage of the election process and ensure a free and fair elections in every sense of the term. If required, as I said earlier, special observers will also be deployed for expenditure monitoring and any other law and order contingency, etc. The Commission has tried to harmonize the integrating cutting-edge technology in our election processes for the last 5-6 years, and that process is an ongoing process. Applications like Booth app and C-Vigil have simplified procedures, made data available at the click of a button, and connected ECI to every stakeholder through their mobile services. Before I finally move on to announce the schedule for Bihar Assembly elections, I would like to tell you that the Commission took various factors into consideration while deciding the election schedule. Elections entail large-scale deployment and movement of security forces from various parts of the country, and we try to minimize their movement over long distances. This is both to reduce their body fatigue as well as to kind of reduce the travel time, etc., and make them feel fresh after a day or two of rest for the election duties. The prevailing COVID situation and necessity of social distancing was also kept in mind. Care was taken that the period of elections is not unnecessarily prolonged. Hence, we have shortened the period of conduct of elections and reduced the number of phases. The number of security forces has been increased manyfold to ensure peaceful elections. Another factor
which has been taken into consideration was the upcoming festival season and convenience of our people. As far as the by-elections to the state assemblies are concerned, you see, we have received representations from CEOs and chief secretaries and CEOs of at least 3-4 states, if not more, on various grounds, seeking some deferment in their by-elections. So Commission has kept a special meeting on the coming Tuesday, that is 29th of September, only to consider those representations, after which Shri Umesh Sinha shall issue the press release of by-elections. The schedule for elections for the Legislative Council of Bihar and Karnataka, teacher and graduate segments, which were deferred by the Commission earlier due to the unforeseen situation of public health emergency, etc., from on 8th June 20 shall also be announced today in a separate press release by Shri Dharmendra and Shri Umesh Sinha. This will cover 4 teacher and 4 graduate constituencies in Bihar. Karnataka elections will be held for 2 graduate and 2 teachers constituencies. 1 MLC election of deferred Nizamabad constituency will also be announced, for which all, except the actual poll, all other electoral steps have been already concluded at the time of deferment, will be announced today afternoon along with the other by-elections for the teachers and graduates. So I think now I would like to read out the statement for which you have been sitting here, and I thank you for your patience. General elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. All this is going to be made digitally available to you in the next half an hour, if not more. Sorry? General elections to the Legislative Assembly of Bihar will be conducted in 3-phase elections. Is it clear? Neeraj, to you it's clear? In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. Am I clear? Yes. Can I go next? That I'll come to. I'm keeping some suspense. I want you to. No, this is a part of the point. I want you to stay with us for some more time. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. In third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 15 districts. Third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 33.5 thousand polling stations. 10 districts will have 2 phases of elections for logistical reasons. 28 districts will have single-phase elections. Patna and Bhagalpur districts will have elections in the first as well as second phase. 8 districts, namely Darbhanga, Madhubani, Purba Champaran, Paschim Champaran,
Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur and Sitamarhi will have elections in second and third phases. 8 districts, namely Darbhanga, Madhubani, Purva Champaran, Paschim Champaran, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur and Sitamarhi will have elections in second and third phases. So now, without further, keeping you in more suspense, issue of notification. First phase, 1st October. Am I clear? Last date of nomination, now I am reading only first phase, right? When I come to second phase, I will mention that. First phase, issue of notification, 1st October. Last date of notification, 8th October. Is it right? Scrutiny of nominations, 9th October. Is it clear? Last date of withdrawal of candidature, 12th October. Date of poll, 28th October. Counting of votes, 10th November, but that will be for all the phases, right? With your permission, 10th November. Can I now go to second phase, please? You there? Yes. Okay. Issue of notification, 9th October. Last date of nomination, 16th October. Whenever you want me to repeat, I will repeat, gladly repeat. Scrutiny of nomination, 17th October. Last date of withdrawal of candidature, 19th October. Date of poll, 3rd November. Counting, as I said earlier, 10th November. Shall I go to third phase, please? Sorry? Shall I go to third phase? Issue of notification, 13th October. 13th October. 13 October. Last date of nomination, 20th October. 20 October. Scrutiny of nomination, 21 October. 21st October. Last date of withdrawal of candidature, 23rd October. 23 October. Date of poll, 7th November. 7th November. Counting of votes, 10th November. Now, I would throw the floor open for... Have your questions, please announce your name and organization before you... Only request is one by one, please. Sure, sir. Just a minute, we'll begin with this. सर, मोहित दुबे न्यूज़ नेशन से बोल रहा हूं मैं। सर, जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव की बात है, आपने कहा कि ऐतिहासिक ये चुनाव होने जा रहा है कोरोना महामारी के दौरान। अगर आपने जो उत्तरी बिहार के बारे में बात की, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, जितने भी जिले हैं, बाढ़ प्रभावित ये इलाके हैं। सर, आपको नहीं लगता था कि इन इलाकों में और फेजेस कराए जा सकते थे? चुनाव आपको लगता है कि 3 ही फेज में मुकम्मल हो सकता है? देखिए, बाढ़ का जो फेज है, इट इज ऑन द वेनिंग साइड. इट वॉज ऑन द राइजिंग साइड, इट इज ऑन द वेनिंग साइड. जब हमारे अधिकारी गए थे, इन्होंने सेवरल पॉइंट्स पे मीटिंग ली थी जिसमें बाढ़ प्रभावित भी था. लेकिन जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया कि इसमें फोर्सेस का मूवमेंट, और जिस बात को मैं बार बार कहना चाहता हूं कि 30,000 पोलिंग स्टेशन अकेले बढ़ने से कितना ज्यादा पोलिंग पर्सनल प्लस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये सब देख के किया गया. सर, इसी से जुड़ा हुआ आज ही अभी यहाँ आने से पहले आपको बता जी, अभी की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर दें. 3 फेज में बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं. पहला फेज बिहार में 71 कंस्टिट्यूएंसीज में चुनाव होंगे. मतदान की तारीख है 28 अक्टूबर. दूसरा फेज 94 सीटों में चुनाव होंगे, मतदान होंगे, और मतदान की तारीख है 3 नवंबर. और
तीसरा फेज 78 कंस्टिट्यूएंसीज में मतदान होंगे। मतदान की तारीख है 7 नवंबर और मतगणना की तारीख है 10 नवंबर, यानी कि 10 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। 10 नवंबर को मतगणना होगी। हम आपको एक बार फिर बता दें, महत्वपूर्ण खबर बिहार चुनाव के संबंधित 3 फेज में ही इस बार बिहार के चुनाव किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से कई तरह की पाबंदियां होंगी, इसलिए सिर्फ 3 फेज में बिहार के मतदान होंगे। मतदान का पहला फेज 71 कंस्टिट्यूएंसीज का 28 अक्टूबर को मतदान होगा, यानी कि पोलिंग डेट 28 अक्टूबर। दूसरा फेज 94 कंस्टिट्यूएंसीज, 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे और मतदान होंगे 3 नवंबर को। तीसरा फेज 78 कंस्टिट्यूएंसीज में मतदान होंगे। मतदान की तारीख है 7 नवंबर और मतगणना होगी 10 नवंबर को, यानी कि 10 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई की सरकार बनेगी या कोई और सरकार बनती दिखेगी बिहार में, यह 10 नवंबर को तय हो जाएगा। और आज से ही चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें सामने रख दी हैं। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपके सामने रख दें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार कोविड को देखते हुए हर तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाकर 1 लाख के ऊपर की जा रही है, ताकि एक पोलिंग बूथ पर 1000 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति मौजूद न हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोविड है या उसके साथ साथ उससे तापमान है, तो पोलिंग के दिन के आखिरी 1 घंटे में उस व्यक्ति को पोल करने के लिए, यानी कि मतदान करने के लिए उसे सामने दिया जाएगा। पोलिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। ये प्रमुख बातें हम आपको बता दें। उसके साथ साथ कैंपेन के तरीके पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद। देवेंद्र, ये जो तमाम कैंपेन की तैयारियां हैं, जिस तरह से सारा आकलन किया गया है, कोविड का पहला चुनाव जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का चुनाव है, 7.2 करोड़ लोग मतदान करेंगे बिहार के इस चुनाव में। जी हाँ, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बात होगी, क्योंकि खुद सरकार का ये आकलन है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होने वाले हैं कोरोना इन्फेक्शन के लिहाज से। और पिछले दिनों जो बैठक हुई थी राज्यों के साथ, उसमें बाकायदा इस बात पे उन्हें तैयार रहने को कहा गया था कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि एक तो फेस्टिवल का समय है, ठंड सीजन चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा संक्रमण का खतरा दिखा रही थी। और वैसे माहौल में अगर चुनाव कराया जा रहा है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए, राज्य सरकार के लिए, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए भी, कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दे सकें। खासतौर पे जो रूरल बिहार है वहां पे ज्यादा बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। नीतीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है, हमारे संवाददाता पटना से। नीतीश, कोविड के समय जो 3 फेज के चुनाव की बात कह रहे हैं चुनाव आयुक्त, क्या यह माना जाए कि बिहार में सभी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स पूरे किए जाएंगे? मास्क होगा लोगों के चेहरे पर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता दिखेगा? क्योंकि आज जो रैली की तस्वीरें आप दिखा रहे थे अब से कुछ घंटों पहले, ऐसा लग रहा था कि बिहार में तो कोरोना है ही नहीं। बिल्कुल, और बड़ी चुनौती होगी। देखिए, चुनाव आयोग ने बिल्कुल रणनीति तो अच्छी बनाई है, बहुत सारे जो प्रावधान रखे हैं कोरोना को ध्यान में रखकर। चूंकि ये पहला मौका है इस तरह के हालात में जब चुनाव हो रहे हैं, तो रणनीति जरूर अच्छी बनी है जो प्रावधान किए गए, लेकिन उस पर अमल कितना होगा ये बड़ा संशय है। क्योंकि हमने जो तस्वीरें आज भी देखी हैं, आज भी जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, मास्क पहने बहुत लोग नहीं दिख रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं थी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद देखिए हम नहीं कर सकते। हालांकि ये ध्यान रखना पड़ेगा, नॉमिनेशन के समय जो प्रावधान किए गए हैं कि सिर्फ 2 लोग जाएंगे, 5 गाड़ियां होंगी, क्या इस पर अमल होगा ये देखना होगा चुनाव आयोग को। नहीं तो जिस तरह के कोरोना के हालात में ऐसे में मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह काफी बढ़ गया है, सड़कों पर उनकी संख्या बढ़ी है, पार्टी दफ्तरों में भीड़ है। मैं बीजेपी दफ्तर में हूं और यहां भी काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। तो चुनावी माहौल कहें जो अब शुरू हो चुका है और अब हर किसी को इंतजार है कि अब आगे कैसे टिकटों का बंटवारा होता है, चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार होंगे वो सारी तस्वीरें हमें दिखाई देंगी। बिल्कुल बिल्कुल बच चुका है। तरुण चुग जी भारतीय जनता पार्टी से के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तरुण चुग जी, चुनावों की घोषणा हो चुकी, 7 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करेंगे और ऐसे में वोटर तक पहुंचना आपके लिए एक चुनौती है। प्रधानमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता संबोधन भी करेंगे। ग्राउंड पर जाकर आप किस तरह से चीजों को कर पाएंगे? और कोरोना के इस काल में तमाम नियमों का पालन कर पाना आसान नहीं होगा। नियमों का पालन हम करेंगे, क्योंकि नियम इस चुनाव की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस चुनाव की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। जी, हम इस परीक्षा में सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमें एक
ऐसे सिटीजन के रूप में दिखना है कि जो कोविड से लड़ेगा भी और लोकतंत्र की रक्षा भी करेगा। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा चुनाव है जो पूरे विश्व को दिशा भी देने वाला है जी। इसको जैसे चुनाव आयोग जी ने, प्रमुख चुनाव आयुक्त ने बोला, अरोड़ा साहब ने, कि बहुत प्रेशर था, आगे करिए वो करिए, उसके बीच में उन्होंने निर्णय लिया है और इसमें नियमों का और सब चीज़ों का उन्होंने एक चार्ट भी दिया है। हम सब लोगों को उसका पालन करना है और ये लोकतंत्र का पर्व है, ये पर्व भी इसी महीनों में है और त्योहार भी इन्हीं महीनों में है। हमें 2 गज की दूरी और मास्क, इन सब चीजों का प्रयोग करना होगा। बिल्कुल, लेकिन व्यावहारिकता इसमें कितनी होगी ये देखने योग्य होगा, क्योंकि बिहार की सड़कों पर आज जो दिख रहा था वो तो कुछ और ही तस्वीर उकेर रहा था। आनंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, जो तस्वीरें आज हमने देखी उसके बाद क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में चुनाव करा पाना आसान है बिहार में, खास करके तब जबकि कॉन्शियसनेस बहुत कम दिखाई दे रही है लोगों में? अजय, आप तो बात कर रहे हैं कि चुनाव के टाइम क्या होगा। आप तो अभी जाके देखिए, अभी भी हम जब बाजार में निकलते हैं तो हम बिल्कुल देख रहे हैं कि मास्क को कोई नहीं लगा रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो अभी जब लोग नहीं मान रहे हैं तो चुनाव के टाइम पे जबकि जो उत्साह रहता है वो चरम पे रहता है। और आज आपने उसका एक नज़ारा दिखाया था हमको सुबह के बुलेटिन में कि जो बीजेपी ऑफिस में पप्पू यादव की पार्टी के लोग पहुंच गए थे। तो जब उत्साह चरम पे होगा तब वहां पे क्या होगा। अभी देखिए 2 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश में वहां के जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने बोल दिया कि मैं मास्क नहीं लगाता हूं। वहां पे उनका बड़ा विरोध हुआ, बाद में उन्होंने माफी मांगी, सब सारी बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नेता इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और जब वो तैयार नहीं है तो उनके कार्यकर्ता भी कतई इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे। बहुत मुश्किल होगी, बिल्कुल एक चुनौती होगी इसमें। आनंद जी, लेकिन जिस तरह से जो व्याख्यान है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरोड़ा जी ने अभी सामने रखी है, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि तैयारियां पूरी हैं और स्थिति का पूरा जायजा लिया जा रहा है। लेकिन जो मॉनिटरिंग की बात है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज निकल कर आई उनके बातों में। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पहली बार चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने दायित्व से कन्नी नहीं काट सकते। और फेसबुक ये नहीं कह सकता किसी ने डाल दिया हम इसके जिम्मेदार नहीं है। ट्विटर ये नहीं कह सकता कि किसी ने ट्वीट कर दिया जी हम इसके जिम्मेदार नहीं है। जी आपका सवाल मेरे से अजय? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है जो लगातार पिछले हम 5-7 सालों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसको बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे किसी भी तरह के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं। उसमें अरोड़ा साहब कह रहे हैं, उनका कहना ठीक है, लेकिन ये कितना इसको व्यवहार में तब्दील कर पाएंगे ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए, और फिर दूसरी बात, जबकि हम फेक न्यूज की बात कर रहे हैं और बिहार जैसा थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य है, वहां पे लोग जल्दी से इन सब चीजों के भुलावे में आ जाते हैं, तो वहां पे इन सब चीजों को देखना ये बहुत मुश्किल काम होगा चुनाव आयोग के लिए, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे संवाददाता और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 3 चरणों में मतदान होंगे। अक्टूबर 28 तारीख को, 3 नवंबर को और 7 नवंबर को, और मतगणना होगी 10 नवंबर को, यानी कि 10 नवंबर तक तय हो जाएगा बिहार का कौन है किंग। बन रही है हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक